on behalf of UPBEAT Journals, extends a warm welcome to one and all present. With the blessings of Almighty, I hope that you all are fit and safe at your place in this COVID situation. I am very happy to say that in this time of pandemic situation, UPBEAT Journal is organizing this workshop on the topic Raise Your Performance by Tapping into Your Highest Potential. This is one of the issues which is necessary for everyone, whether we are at 16 or at 60. Before we formally begin the session, let me brief about Upbeat Journals. Upbeat Journals is a digital initiative which aims at providing knowledge in the field of the law, society, and politics. We at Upbeat Journals care a lot about the nation, as every nation becomes as every nation is part of people, so it is important for the people to know what is happening around the world and what are the benefits for them. So here we are, and we are absolutely elated to have with us retired Commander Jagmohan Singh Bhogal, international speaker and mindset transformation coach. Sir has served Indian Navy for 22 years. Sir was the former National Project Director, Pradhan Mantri Yuva Yojana. Sir is the former Senior Director, Quality Council of India, and former Quality Head, Santal Avconics. Sir achievements are far too many to be cited in this short span of time. Thank you so much, sir, for taking your time for this wonderful workshop. Today's workshop will be for 1.5 hours. If you have any questions in your mind for sir, you can drop your questions in the comment box given below. Your questions will be taken at the end of the workshop. Thank you so much. Over to you, sir. Okay, thank you very much, Divyanshi. Thanks a lot to Upbeat Journals for having me here with all of you and connecting me with all of you. So it's my pleasure to be a part of this organization and share my own experience or whatever my learnings have been in my life with all of you. And as I can understand, all of you are students of generally law, but maybe there may be some other students as well. So all are students at some stage of your educational journey, trying to get into the corporate world. So thank you very much once again for having me here. So I would like to start the presentation right away. So just want to check if all of you, how many of you would like to be successful in life? I want all of you to go and type yes, if yes, all of you. Please type yes. Type in the chat box yes. Okay. Okay, thank you. So as we can see, I mean, today is a Sunday and Sunday evening. A lot of things, a lot of activity has already started in various organizations. I'm sure all of you are, I believe you had some practical examinations in last few days. So you just come out of practical examinations and must have been planning to have some, gala time, a party or a late evening or something like that. But then all of you have decided to come and join me for this seminar. So for that, my heartfelt gratitude to all of you for having spared your time and to come and listen to me. Definitely that shows that you have a lot of commitment towards learning something new, towards learning, towards moving towards a situation where you want to bring in a change in your life or you want to think differently. So thanks a lot, and I assure you that I will give my 100% to make sure that by the end of this 1.5 hour session, I would have created some, even if it is small, even if it is 5%, but some amount of shift in the way you think towards life.
So with that commitment, I would like to move forward. If you're not having a pen and paper with you or a pencil notepad, I would give you 30 seconds. Quickly grab a pen and a paper with you. Keep it with you because we are going to do some exercises where you may be required to note down a few things. So you can quickly go and grab a pen and a paper. Okay. Okay, let me begin by asking a few questions. Have you come across people wherein you find that they put in a lot of effort in their life, a lot of effort, and they work very sincerely, they work very hard, they give their 100%, but still somewhere they are not able to achieve the results that actually should have been, which everybody else feels that this guy is really very hardworking, he's dedicated, and he's going to do very well in his examinations or in life. But you ultimately find that they fall short somewhere. I mean, they don't achieve what. Have you ever seen such kind of people? Heard about such kind of people in your life or in your career? Yes. Okay. Okay, thank you. Thank you. You also must have heard about people who, in their educational life, in their educational background, is not very good. Those kind of people whom all you must have seen in your colleges. They sit at the last bench and they do all kind of masti, and they sit and go to canteen and do all stuff of all that stuff, naughty stuff. But not at all serious about their studies, bunking classes and going for movies in the class time, sometimes like that. But in life, they do very well. They end up doing very well in their life. At the same time, there are on the other hand, you would have seen some people who are like very studious. They will always be attending all the classes, 100% attendance, giving their 100%. But in life, sometimes they are not able to achieve as much as is expected with that kind of effort. Yes, okay. Thank you. And similarly, you would have seen some people who are always sad. You ask them, how's life, and they will always be grim and they will always be with a sullen face and they'll be, it's okay, I'm still struggling, I've not done this, I've not done that, मेरा ये syllabus भी छूट गया, मैंने वो भी नहीं किया, वो भी करना है, and I have to also do this and that, and competitive exam की तैयारी भी करनी, but मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ ना. And they're always like, building up a story as if, nothing is going well in their life. And at the same time there are always people जिन्होंने मतलब कि एग्जाम से पहले 4 चैप्टर छोड़ रखे होते हैं और उनको बोलो तैयारी कैसे होगी, कहा बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, गुड. ऐसे भी लोग होते हैं. So we always find there are two categories of people. There are people whom we can say they are successful in life, they are happy in their life in whatever they are doing, and there are people who are like not so successful. I won't say failures. The failures are nobody is a failure. So, but then there are people who are not so successful. So there are these two categories of people. So what is it that separate this category A and category B? What is it that brings in a difference between some kind of people and the second kind of people? So all of you can just go in and type what do you think is the difference between these two type of people? Yeah, whatever you feel, whatever you think is the difference between category A and category. Please go ahead and type. And I want you to interact. I want you to be a part of this. I'm not going to give you a sermon, so it's not one-way communication. I want all of you to participate, whatever you may feel. Yeah, okay. Thank you, Jasmine. Thank you very much.
So, I would like to summarize it in general. It's basically a balance between IQ and EQ, and that's what I have worked upon for quite some time and tried to find out, where do people put in a lot of effort, but they just fall short of somewhere. So, what is it that holds them back? What is it that they're not able to give their 100%? They want to give 100%, but somehow they end up stopping somewhere at 96, 97%. So what is it that little bit which is required? So my appreciation of this whole thing has been that it's a balance between EQ and IQ. So all of you have got a pen and a paper, right? And all of you love to play tambola or housing. So you want to play some game here, right? So what I want you to do is that you make two columns. So Tambola, there are generally three columns, but here we have only two rows. So what I want you to do is just make two rows. On top row, you write 1 to 10, and the bottom row is A to J. So please draw this matrix on your paper. Please draw this matrix on your paper. Okay, I'm getting all the comments now. So all of you have drawn this two rows. Top row 1 to 10, bottom row A to J. Okay, great. Great. So let's move. So what I'm going to do in this game is that I'm going to read out some characteristics. I'm going to read out some traits of people. And what you have to do is, and each of those traits will have in a bracket either a number or an alphabet. So if that trait is applicable to you, you strike out that number or that alphabet. So we'll go through it and you will come to know what it is exactly, right? So the first trait is aggressive. So if you are aggressive, if you think that you are aggressive, then strike out 8. Strike out 8 in row 1. Wherever you have written 8, just strike it out. Just like you strike out numbers in a tambola ticket. If you are aggressive, if you feel, and you have to be very honest in your assessment, if you feel that you are aggressive, then strike out 8. If you feel you are ambitious, if you are ambitious, strike out E. Selfish, if you think you're selfish, strike out 3. Number 3, selfish. Number 7, bossy. You're always like bossing around, and I'm the boss in every situation, at home, in office, wherever, in school, college. I should be the boss. So if you're that kind of a person, strike out 7. If you're a good listener, strike out 8. A. Strike out A. A for a good listener. H. If you are neat in all your work, if you very neatly maintain your records, maintain your journal, if you very neatly maintain your notebooks, your home, your room, everything, if you keep it very neat and clean, then H. If you're careful, if you're careful about everybody, everything in your life, you do everything very carefully, strike out C. If you find yourself resistant to change, you have an inner resistance towards change, then strike out 5. If you are assertive, then strike out B. Assertive means, I know what I want, and I will convey it very firmly that I need this, I want this, but without being aggressive. So assertiveness is different from aggression. So I will not shout, I will not scream, I will not throw tantrums, but yes, I will tell that I want this, I need this. That's how it should be. Stubborn. If you're stubborn, number 4. Number 4 for stubborns.
If you're easily distracted, you're doing some work and you find something happening or somebody has walked across and you get distracted with that, then strike out 1. Distraction with your mobile, distraction with television, distraction with movies, or anything distracts you from your focused approach, then strike out 1. Consistent, if all your efforts, if all your work that you do is consistent, then strike out G. G for golf. If you have a strong willpower, if your willpower is very strong, then F. Strike out F. If you're sociable, if you prefer to be with friends, if you like to make friends and you like to socialize with relatives and friends, then strike out D. If you're demanding, ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए सब हर आदमी से आपकी डिमांड कोई ना कोई है, तो स्ट्राइक आउट 2. इफ यू आर फसी, ऐसे नहीं ऐसे ही मतलब हर चीज आपके हिसाब से होनी चाहिए, इफ यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, देन स्ट्राइक आउट 6. Okay, so I think by now we have struck off. It's not necessarily that you would have struck off all the alphabets or all the numbers. It can be a mix of them. So what I want you to do now is count how many numbers have you struck. Numbers, count, not totaling, just count how many numbers have been struck off and how many alphabets have been struck off, and then check which one is greater, which one is more. Are the numbers, count of numbers 1, 2, 3, how many have been struck, are they more, or the ABCs which have been struck, they are more? Okay, 4 numbers and 8 alphabets. Great. So alphabets are more, so we say alphabets are more. Great. So likewise, everybody please check, and what I am going to tell you here is that in case your numbers are more, in case the numbers are more, then it's an indication of low emotional intelligence. And at the same time, if alphabets are more, then that's an indication of high emotional intelligence. Great. Perfect. Great. Thank you very much. Thanks a lot. So this is a rough indication. Okay, this is not this. So there are very stringent tests for measuring emotional quotient, but this is just a rough guess, and just to make you aware as to what are the characteristics which make up the emotional quotient, high emotional intelligence and low emotional intelligence, because we are going to talk about IQ and EQ. There was a time when success was always defined by the intelligence level of a person. So how was intelligence level measured? So in our times, I can share with you, in our times, if you are studying science, then you are the most intelligent. If you are studying commerce, then you are less intelligent. And if you are studying humanities, then you are not intelligent at all. So that is how it used to be graded. So over a period of time, the things have changed. So now it is, if you are scoring 99.5, then you are intelligent. And if you are scoring 97 or 96, then you are not intelligent. That is how at times we end up putting the definition of intelligence. We tend to measure intelligence with the marks that you score in examinations, which is actually not correct. So what is this in IQ? When we talk about intelligence quotient, what is this IQ? So IQ is the measure of logic, how well you apply logic. How good is your memory? How well are you at memorizing things? That's an indication of your IQ. Concentration. How well can you concentrate on something? How good is your language? The spoken language and written language. How good you are in language? Comprehension. If somebody is telling you something, how good are you in comprehending that command or that order? Or how well can you express your feelings, your desires, or your needs to somebody else? Analytical skills, how good you are at analyzing the things. So all these, they make up the IQ component. But over a period of time, last, I think since 1995, a lot of research has gone in, and they found that it's not always true that if you're intelligent, if your IQ is high, that means you are naturally successful. That is not the case. And they were actually studying as to how can such an intelligent guy fail in his life.
how he's not a good leader, how a person who was a topper in his university and a gold medalist, how he could not make up a good manager or a leader. So they were actually they started researching on all these things, and they found that there was a component called emotional quotient, which was also a component of success. So it was the IQ and EQ together which made a person successful or not so successful. Now, what is this EQ? Self-awareness, awareness of yourself. Aware, like we say, look inside, right? Look outside. IQ is awareness of outside world. What is happening outside? So around me. So your mathematics, your science, physics, chemistry, history, geography, all those things where you memorize and write in examination, they are all part of your IQ. But knowing about yourself, what do I like? What do I don't like? What do I want? What do I don't want? What do I want to become in my life? What do I don't want to become in my life? What are my vision? What is my mission? What are my objectives in my life? So knowledge of all these things is the first component of EQ. Then self-regulation. How good am I at regulating myself or managing my own self? If you can't manage yourself, how can you manage others? If a boss is not a good manager of himself, if he can't come on time in the office, how can he expect his employees to come in time? So self-regulation. So I may be super duper intelligent. You must have seen such cases actually, that very super duper intelligent students, they have actually failed because they could not manage themselves well, because they went into this PUBG and online gaming and YouTubing and all that stuff, and they totally lost track of their education. Yes or no? Yes? Great. Third thing is empathy. Empathy towards others. How I feel about others. So that's the third part. The fourth thing is social skills. How good a social person you are. You may be super duper intelligent, but if you don't meet people, if you don't greet people, if you don't talk to people, you are no good. So you have to be a socially acceptable human being. Creativity. Everything about arts, everything about music, everything about painting, sculpting, and everything about creative things is part of emotional quotient. And self-motivation. You need to be self-motivated. You don't need someone to always be pushing you. Now do this, sit down, do this. No, that should not be there. There should be a motivation from inside to achieve something. So when that is there, then obviously your chances of becoming successful are much more. So I'm sure if you compare these two things, you would realize, or you would agree with me, that people with the EQ component, higher EQ component, are more likely to be successful. You would have seen your seniors by now. You would have seen people in your college or in your internship, that people with these kind of quality are the ones who actually rise up, are more popular as leaders, and are more popular as managers. So that's how they become successful. So IQ gets you hired, but EQ gets you promoted, right? So let's move on to the next slide. And let's say you are at point A in your life, whatever this point A may be. As per different people, this point A may be different, and you want to reach point B, and let's call that point B a point of success. That could be you want to climb Mount Everest. That could be that you want to bring out your own album. That could be that you want to become a successful painter, or you want to have an exhibition in Nehru Gallery, or you want to do a program as a singer. You want to launch your first song in the market, or you want to sing for movies, or you want to act in movies. Whatever, this point B could be anything. Your journey from point A to point B, is it going to be like the straight line shown in red, or is it going to be like a yellow line shown in a zigzag line shown in yellow? Is it going to be red, or is it going to be yellow? How is our journey from point A to point B in our life? How is our life?
Is it always in a straight line? Is it always easy, or is it always zigzag? So there are yellow. Yeah. Okay. Thank you. So there are ups and downs in life. You decide to go for your interview from your home to, let's say, in Connaught Place, and you start your bike or your scooter, and you realize, sometimes you just take out and the fuel is not there, you have to push it, or tire gets punctured, or there is a accident on the road. And there are always obstacles, there are always ups and downs in life. Sometimes the things are very smooth, they are seemingly like, perfectly fine. I mean, everything is hunky dory and the things are happening in my favor. But then there are times when things are not happening in your favor. There will be times, or there may be times when there are low times. Okay, so it's the EQ which pushes you back from your tough times. So when you are caught up in tougher times, if your EQ is high, it will be able to pull you up from your difficult times. And when you're in good times, the EQ will make those good times better times, or much better times. Your success will become much faster when you are in your success phase. And when you are in your tough phase or in your down phase, the EQ is the one which helps you pull up and brings you back on your track. So you must have heard of, a lot of last 1 month there have been three news. Like, one is Sushant Singh Rajput, and there has been two young 15 and 16-year-old TikTokers who have committed suicide. Two girls who have committed suicide. So it's, sometimes it's very good to be in the a better half of that life. That everything is, I'm getting a lot of likes, I'm getting a lot of followers, and I'm becoming a celebrity. Good. But when you go into the tough phase, then the only thing that pulls you up is your EQ. So having a very high EQ is very important, along with higher IQ. So research has happened, and they have found out that EQ is 80% responsible for the success of a person. So a person who is successful, they've done this research on 500 CEOs of the top 500 companies, global companies, and they found that 90% of the top leaders of these top performing companies were very high in EQ. So if we take success as a whole, then EQ is 80% responsible for your success, and IQ, which is what? Logic, memory, concentration, all these things. So that is only 20%. That contribution of IQ is only 20%. So now, having gone through this, you would have realized, where is this EQ being taught to you? If EQ is so important, if it is 80% component of your success, where is it being taught to you? Where are you being prepared to have higher EQ? Is it happening anywhere? Is it happening in corporate world? Is it happening in colleges? Is it happening in universities? Is anybody telling you all this stuff which I have told you? And there's much more to come, and just be with me. So as we saw, IQ and EQ, and again, you can see in the middle there is something like which looks like a brain. So this IQ and EQ, basically they reside inside our brain or mind. So when I ask this question from people, there's a general confusion. Some people will say brain, some people will say mind. And if I ask them where is mind, they will either point to their head or their heart. Somebody says it's here, somebody says mind is here. So if we are talking about IQ and EQ, if we are talking about EQ being responsible for our success, then we also need to understand what is this brain and mind. What is this mind we are talking about? Because if we don't understand our mind, it's not possible to understand EQ. So let's try and understand a little bit about brain or mind. What are these two things? So, and how are they different? So brain is the hardware, and mind is something like a software. So let me give you an example. Let's say if you go to the market and you pick up a very good, very high quality smartphone,
and you bring it home and you take it out of the box and you're very happy, and you want to send a message on WhatsApp to all your friends that you see, now I have bought a new iPhone 10 or whatever, and you charge it, and you're trying to send a message on WhatsApp, and you're not able to send a message. Why? Because so far you have not yet downloaded WhatsApp. So what you do is you go to Play Store and you download WhatsApp on your mobile. You configure it with your mobile number, and you send a message, and the message is going. So now WhatsApp is working. And this whole thing goes on for 1 month. Early morning, you send a good morning message, think positive, very good morning, and you send a message. And in the afternoon, some videos come from here and there, you send them. And at night, good night. And 1 month, this routine is going on. After 1 month, you realize that you are sending the message, but the message is not reaching to the receiver. So you take your phone and you go to the company and you tell them, look, I purchased this phone 1 month ago and it's not working. So he says, tell me what's the problem. मैं इसमें WhatsApp मैसेज भेज रहा हूँ लेकिन ये मैसेज तो जा नहीं रहा है उधर, तो ये आपका फोन तो खराब हो गया. And he will take the phone and he will check it and he will say, sir, phone is working. Probably there is a problem with your software, with the WhatsApp software. So because phone तो ठीक काम कर रहा है, तो क्या करूं मैं अभी? तो बोलेंगे कि आप ऐसा करो कि जो आपका WhatsApp है ना, उसको आप अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करो, तो आप चेक करो ठीक होता है कि नहीं होता है. And you do the same thing. You uninstall WhatsApp, you reinstall WhatsApp, and you realize that the phone is not working. So what is it that was making the phone defective? It was not the hardware. The hardware which we can touch, which we can see, the phone itself. There was nothing wrong with the phone. There was nothing wrong with the hardware. But the problem was with the software which was there inside the hardware. That's the WhatsApp software. So if your software is not doing its function properly, or I can say if your software is defective, or I can say if your software is corrupted, then howsoever good hardware you may have, it is not going to perform its function for which it is designed. Right? So hardware was same. It was only the software which got reinstalled and the function started. So the difference between category A and category B people is this software. And what is this software? This software is your mind. So whenever I am going to talk about software, I will be talking about mind. So we have two type of minds. We have a conscious mind and we have a subconscious mind. So we have many type of minds, but we will restrict it to only two to make it easier for understanding. And as you can see, our mind follows a iceberg approach. What is an iceberg approach? An iceberg approach is that 10% of the iceberg is visible above the water, and 90% of the iceberg is actually hidden under the water. So it's only the 10% which you can see. Rest 90% is only always hidden. So what you are able to see, that 10%, the conscious part of the mind, is responsible for willpower, short-term memory, logical thinking, critical thinking. So you remember now, logic, language, analysis, analytical thinking. So that is what is happening in your 10% of the conscious mind. And 90% which is hidden is called your subconscious mind, and that has got what? Beliefs, emotions, habits, values, long-term memory, and imagination. Imagination, creativity comes from imagination. So as we can see from the definition, or initially how we defined IQ and EQ, we can easily see that IQ is the component of conscious mind and EQ is the component of सबकॉन्शियस माइंड. एंड हिंदी में इसको हम जागृत मन या अर्ध जागृत मन कहते हैं. तो जैसे नाम से बिल्कुल क्लियर हो रहा है, कॉन्शियस मींस जागते हुए, व्हेन यू आर कॉन्शियस, एंड सबकॉन्शियस मींस अर्ध जागृत, ना पूरी तरह से सोया ना पूरी तरह से जागा. तो वो जो रात को एक फेज आता है ना, जब आप सोने जा रहे हैं और धीरे धीरे
नींद आ भी रही है लेकिन नींद पूरी तरह से आई नहीं है, तो वो जो बीच वाला फेज होता है दैट इज व्हाट वी कॉल अर्ध जागृत और सबकॉन्शियस स्टेट। सो क्योंकि हम EQ के बारे में बात कर रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये EQ क्या है और EQ कैसे बढ़ाना है, and somebody is asking how to increase, yeah, so if we're trying to learn how to increase EQ, we need to also learn about subconscious mind, where it's coming from। तो जहां से ये आ रहा है EQ हमारा, तो उसके बारे में भी समझना पड़ेगा कि ये सबकॉन्शियस माइंड चीज क्या है और कैसे ये EQ फॉर्म हो रहा है। तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं, जैसे ये दोनों कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में डिफरेंस क्या है, हाउ दे आर डिफरेंट एंड हाउ डू दे फंक्शन, व्हाट इज देयर रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्शियस एंड द सबकॉन्शियस। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, और एग्जाम्पल है एक माली का। तो जो एक माली है, माली का क्या काम होता है एक बागीचे के अंदर? माली का काम है कौन सा फूल लगाना है, कहाँ लगाना है, कहाँ से खरीद के लेके आना है, कौन सी खाद डालनी है, पानी कब देना है, उसकी गुड़ाई कब करनी है, क्यारी ऐसे बनानी है या ऐसे बनानी है, घास कहाँ लगानी है। तो ये सारा सोचने का काम जो है, प्लानिंग का जो काम है, ये सारा काम करता है गार्डनर यानी कि माली। तो ये जो माली है ना, ये है हमारा कॉन्शियस माइंड जो पूरी प्लानिंग करता है। अच्छा मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, 1 साल में मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा, 2 साल में मैं ये कंपटीशन क्लियर कर लूंगा, फिर मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा, फिर मैं लॉ फर्म शुरू। तो ये सारी प्लानिंग जो होती है ये आपका माली करता है, कॉन्शियस माइंड विच हैज गॉट ओनली 10% पावर, 10% पावर। नाउ वंस एक बार ये माली ने डिसाइड कर लिया, बीज लेके आ गया मार्केट से और डिसाइड कर लिया कि ये वाला बीज मुझे यहां डालना है, और उसने वो बीज वहां डाल दिया, जमीन के अंदर बीज डाल दिया। उसके बाद माली का क्या कंट्रोल है इस चीज पे कि वो बीज उगेगा या नहीं उगेगा, कितना उगेगा, कितने दिन में उगेगा? क्या माली के पास कोई कंट्रोल होता है इस चीज का? कोई कंट्रोल नहीं होता। माली कैन ओनली पेशेंटली वेट एंड वॉच कि मैंने यहाँ बीज लगाया था, आप जाके भले ही उसको रोज ऐसे करके देखते रहो, उगा नहीं, अच्छा, फिर अगले दिन फिर गए, फिर ध्यान से देखा, उगा नहीं, तो उससे वो उगने वाला नहीं है। वो तभी उगेगा जब जमीन उसको उगाएगी। तो यहां पर रोल आ जाता है किसका? जमीन का, लैंड का। और ये लैंड और कुछ नहीं है बल्कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड या अर्ध जागृत मन जो है, दैट इज लाइक अ फर्टाइल लैंड। और ये फर्टाइल लैंड का क्या क्या पावर है, इसकी इमेंस पावर। उस बीज को उगाना या ना उगाना ये टोटली इस लैंड के हाथ में है। तो ये लैंड ही है जो उस बीज को उगाती है। अब अगर माली के हाथ में 2 बीज हैं, 2 बीज हैं, एक बीज है बहुत खूबसूरत फूल का और दूसरा बीज है एक कड़वे फल वाली एक झाड़ी का जिसमें बहुत सारे कांटे। 2 बीज है, वो दोनों बीज लेकर के लैंड के पास जा रहा है और गड्ढा खोदा और दोनों बीज डालने जा रहा है। क्या कभी लैंड माली को ये बोलेगी कि भाई फूल तो ठीक है, तू बीज रहा है, इट्स ओके, लेकिन ये कांटे क्यों बीज रहा है? इससे तुझे परेशानी होगी, इससे लोगों को परेशानी होगी, इसका कोई फायदा नहीं है, ये कड़वे फल देती है, तो ये तो कांटों वाली झाड़ी क्यों बीज रहा है? लैंड कभी उसको ऐसा बोलती है क्या? कभी बोलती है क्या? कभी नहीं बोलती है। लैंड का काम क्या है? जो बीज माली ने डाल दिया, दोनों बीजों को, चाहे वो अच्छे खूबसूरत फूल का है चाहे वो कांटों की झाड़ी का है, दोनों बीजों को बराबर मेहनत और बराबर शिद्दत से पौधे में कन्वर्ट करती है। भेदभाव नहीं करती कि मैं फूल उगाऊंगी कांटे नहीं उगाऊंगी, ऐसा नहीं करती है। तो लैंड की पावर ये है, पहली पावर, कि उसमें जो भी डालो वो उसको बराबर उगा देती है, सवाल नहीं पूछती और ना ही ये डिसाइड करती है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। दूसरी पावर, उसमें अगर आपने एक बीज डाला, लेट्स से आम का एक बीज डाला, तो क्या जो पौधा उगेगा, लैंड जो है वो आपको जो फल देगी, क्या वो एक ही आम देगी? नहीं, सैकड़ों आम देगी। इसी तरह से अगर आपने कांटे का एक बीज डाला तो क्या एक ही कांटा मिलेगा? नहीं, सैकड़ों कांटे मिलेंगे। तो लैंड क्या करती है? आप उसमें जो भी बीज डालते हो उसको मल्टीप्लाई करके आपको देती है। यू गेट मल्टीपल्स ऑफ इट, नॉट द सेम।
तो एक बीज अगर आपने गेहूं का डाला तो वो जो एक सिट्टा निकलता है गेहूं का, उसमें 20, 25, 50 गेहूं के दाने निकलते हैं। एक टमाटर का बीज डाला तो एक टमाटर के पौधे में 20-25 टमाटर निकलते हैं। तो जो आपने डाला, पहली चीज वही उगेगा। तो अगर आपने फल के बीज लगाए हैं तो फल मिलेंगे। फल में भी अगर आपने आम का बीज लगाया है तो आम ही मिलेगा, संतरा नहीं मिलेगा। अगर आपने कांटे का बीज लगाया तो कांटा भी डेफिनेटली मिलेगा। लैंड ये कभी डिसाइड नहीं करेगी या कभी ये नहीं सोचेगी कि चल इसने गलती से कांटा बो दिया है तो चलो कांटे को नहीं उगाते हैं। नहीं, वो कांटे को भी उसी शिद्दत से उगाएगी। और दूसरी चीज, जो भी बोओगे मल्टीप्लाई होके मिलेगा। तो ये कुछ पावर्स हैं इस लैंड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब ये बीज जो है ये क्या है, क्या है ये बीज जो मैं कह रहा हूं कि आपने अगर ये टमाटर बोया तो आपको टमाटर मिलेगा, आम बोया तो आम मिलेगा? क्या है ये? हमारा माइंड में हम खुद बीज डालते हैं। किस चीज के? सक्सेस के, हैप्पीनेस के, पॉजिटिविटी के। तो अगर आपने सक्सेस का बीज डाला तो क्या मिलेगा? सक्सेस। अगर आपने हैप्पीनेस का बीज डाला तो क्या मिलेगा? हैप्पीनेस। अगर आपने पॉजिटिविटी का बीज डाला तो क्या मिलेगा? पॉजिटिविटी। अगर आपने लव का बीज डाला तो क्या मिलेगा? लव। अगर आपने वरी का बीज डाला तो क्या मिलेगा? वरी। अगर आपने फियर का बीज डाला तो क्या मिलेगा? फियर। अगर आपने उसमें एंगर का बीज डाला तो क्या मिलेगा? एंगर। तो ये हैं चीजें जो हम अपनी लाइफ में बोते हैं, कंटिन्यूअसली बोते हैं। एवरी मोमेंट, एवरी सेकेंड वी आर पुटिंग सीड्स इन आवर लैंड। किस चीज के सीड? इन सब चीजों के सीड। तो आज आप देखिए कि आपकी लाइफ में आपकी जो क्यारी है, आपके सामने जो आपका जो बाग है, उसमें क्या ज्यादा है? फूल ज्यादा है या कांटे ज्यादा है? खुशियां ज्यादा हैं या दुख ज्यादा है? सक्सेस ज्यादा है या फेलियर ज्यादा है? गुड रिलेशनशिप्स हैं या सारे स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स हैं? तो ये अगर आप आज देखते हो, अगर आपको लगता है कि फूल ज्यादा हैं तो वो आपने बोए हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। लेकिन अगर आपको लगता है कि कांटे ज्यादा हैं तो वो भी आप ही ने बोए हैं, वो भी आप ही ने बोए हैं। तो आज तक हम बीज डाल रहे थे, बीज डालते आ रहे थे। कई बार हमें पता था, कई बार हमें नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है, कि ये करने से ये आगे चल के मेरे को ये प्लांट जो है, ये पौधा मेरे को सामने आने वाला है। हो सकता है हमें पता ही नहीं था और हम unknowingly we were doing all this stuff. But today we know that जो हम बोएंगे, ये हमारी बहुत पुरानी कहावत है, जो बोओगे वही काटोगे। Whatever you sow, so shall you reap. तो आज तक हमारे सामने जो फसलें हमारी खड़ी हैं वो वही हैं जो आज से पहले हमने बोई है। लेकिन आज के बाद जो हमें मिलेंगी, एक हफ्ता बाद, एक महीना बाद, कल, एक साल बाद, वो वही प्लांट मिलेंगे जिसके बीज आज हम डाल रहे हैं। तो आज भी हम बीज डाल रहे हैं, लगातार हम बीज डाल रहे हैं। तो अगर आज हमें ये पता चल गया कि ये बीज हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, ये बीज कांटों के बीज हैं, ये बीज जहरीले बीज हैं, तो आज हम उन्हें बोने से, सो करने से रुक सकते हैं, रोक सकते हैं। तो ये चेंज एक हम अपने आप में ला सकते हैं, प्रोवाइडेड वी नो हाउ आर वी सोइंग दीज सीड्स। अब आपका अगला सवाल होगा कि आप बीज की बात कर रहे हो, लेकिन कैसे बीज बोए मैंने, ये कैसे, मेरे को तो पता ही नहीं कि कब ये बीज आ गया अंदर। आपको नहीं पता है, बिल्कुल सही बात है, आपको पता ही नहीं है, क्योंकि हमारी अपनी वो कॉन्शियसनेस लेवल उतनी है नहीं कि हमें ये समझ में आए कि ये मैं क्या कर रहा हूं। तो मैं इसके लिए आपको बताऊंगा कि वो कौन से बीज हैं जो हम बोते हैं। What are those seeds? So those seeds are of four types. So the first one is your thoughts. The thoughts that you think in your mind, that is your first seed. So if your thoughts are about fear, if your thoughts are about worry, if your thoughts are about something bad, then you are sowing these seeds. तो उगेगा क्या? आज कोरोना में है हम लोग, तो दिन रात जो है टेलीविजन के ऊपर कोरोना एंड फियर और ये सब चीजें हो रही हैं।
तो अगर हमारे माइंड में हमेशा एक सोच चल रही है कि ओ माय गॉड कोरोना, या अगर मुझे हो गया तो क्या होगा, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगा, ये वो, तो अगर आप कंटिन्यूअसली ये बीज डाल रहे हो तो आज से एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद ये प्लांट उगेगा। बिकॉज लैंड नहीं बोलेगी कि भाई क्यों उगा रहा है, वो तो उगा देगी। तो सीड आप डाल रहे हो कैसे? सोच से, अपने थॉट से। दूसरे टाइप के सीड जो हम डालते हैं वो है हमारे वर्ड्स, द वे वी वट एवर वी आर स्पीकिंग। तो हम जो लोगों से बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, किस तरह के शब्द हम बोलते हैं। कई लोगों की लैंग्वेज आपने सुनी होगी, हमेशा बहुत कड़वी लैंग्वेज होती है, नेगेटिव वर्ड्स बोलते रहते हैं। तो अगर हमारे वर्ड्स नेगेटिव हैं तो हम नेगेटिविटी बीज रहे हैं, उगेगा क्या? नेगेटिविटी। तो वर्ड्स जो हम बोले उसको हमें करेक्ट करना चाहिए। तीसरे टाइप के बीज जो हम बोल रहे हैं वो है हमारी इमेजेस। इमेजेस यानी जो हम देखते हैं, दो तरीके से देखते हैं, एक तो खुली आंख से और एक बंद आंख से। ऐसा कभी महसूस किया आपने कि कभी आप ऐसे आंख बंद करके बैठे हैं और माइंड में कुछ पिक्चर चल रही है, अपने आप पिक्चर कुछ चल रही है, कोई एक टॉपिक शुरू हो गया और उसके बारे में कोई एक फिल्म बनने लग गई, कोई एक वीडियो चलने लग गई आपके माइंड के अंदर। तो ये जो इमेजेस हम देखते हैं, और जो खुली आंख से देखते हैं क्या? न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टेलीविजन्स, आपके टेलीविजन सीरियल्स, मूवीज, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं, फेसबुक के ऊपर वीडियोस हैं। तो ये सारे इमेजेस जो हम देख रहे हैं ये सब बीज हैं। तो अगर आप रात को सोने से पहले कोई इस तरह की मार धाड़ वाली मूवी देख रहे हो, हॉरर मूवी देख रहे हो, या वो सीरियल देख रहे हो, क्राइम पेट्रोल या सावधान इंडिया, सीआईडी, तो इस तरह के सीरियल देख रहे हो क्राइम वाले, तो वो सीड आप अपने माइंड में डाल रहे हो। अगर आप इस तरह की बुक्स पढ़ रहे हो, इस तरह के नॉवेल्स पढ़ रहे हो, तो वो सीड्स आप अपने माइंड में डाल रहे हो। तो images that we are creating in our mind about anything, they can be positive, they can be negative. So images, if you are creating, are very positive. If you are creating a positive image, if you are thinking about yourself as a successful person, if you are seeing yourself as a successful person in future, then that's a positive image. Then this is the third type of seed. And the fourth type of seed what we sow are feelings. So how do we feel about something? How do we feel about others? How do we feel about our relationships? How do we feel about, तो मैं आज कैसा फील कर रहा हूँ? You must have heard about these things. अरे आज पता नहीं कैसा दिन है यार, आज I'm not feeling good. Somehow I'm not feeling good. I don't know. कुछ तो गड़बड़ चल रहा है. You know, I don't feel good in that place. I don't feel good with these people. I don't gel well with them. मेरी कुछ उनको ना vibes अच्छे नहीं आते इन लोगों के साथ। तो ये जो फीलिंग आपकी आती है, कभी कभी हम कहते हैं कि वो फीलिंग जो है हमें इंडिकेशन देती है कि आगे क्या होने वाला है। तो ये जो फीलिंग्स आती हैं ये हमारे बीज हैं। सो इफ यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड यू आर फीलिंग वेरी ब्राइट, यू आर फीलिंग वेरी गुड, देन दैट्स द सीड दैट यू हैव सोन फॉर द डे, एंड थ्रू आउट द डे यू आर गोइंग टू हैव दैट फीलिंग। तो आपने कभी देखा होगा रात को अगर नींद नहीं आई, कुछ अलग अलग से सपने आ गए, बीच में उठ गए, तो सुबह जब आप उठते हैं तो बड़ा एकदम अलसाहट वाला ऐसा फीलिंग आता है, एंड यू नो फील ओ माय गॉड पता नहीं क्या है आज, नॉट एट ऑल फीलिंग गुड। एंड देन यू रियलाइज दैट दैट फीलिंग इज कैरिड ओवर थ्रू आउट द डे। पूरा दिन आपको अलसाहट सी और बड़ी इरिटेशन सी और फ्रस्ट्रेशन सी होती रहती है। सो फीलिंग्स, so how do we feel this? How do we create this feeling? So here I am going to teach you a small exercise. So what you are going to do tomorrow, first thing when you wake up, first thing when you open your eyes, not the first thing when you get up from the bed. You may get up from the bed at 10 o'clock, but you would have woken up maybe at 6:30 or 7. So first thing when you, आपकी conscious जब आती है, उस समय जो सबसे पहली चीज आपने करनी है वो है you have to say a line. What is that line? Thank you God for this beautiful day. Thank you God for this beautiful day. तो ये लाइन आपने सुबह उठ के बोलनी है। तो ये लाइन जब आप बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली इवन इफ देयर आर सम नेगेटिव फीलिंग्स दैट यू आर हैविंग, they will get converted into positive feelings. And we are using words, and we are creating a thought for a beautiful day, and we are creating an image for a beautiful day. So हम सुबह उठकर जो बीज डाल रहे हैं वो किस चीज का डाल रहे हैं? For a beautiful day. So the day which is going to come in front of us is going to be beautiful. तो ये एक एक्सरसाइज आप कल से करना शुरू कर सकते हैं for improving your feelings, for sowing the seeds of every day as a beautiful day.
तो अगर हमारा हर दिन खूबसूरत हो जाए तो जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। यस और नो? यस। सो अभी यहाँ पे हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करना चाहेंगे। आई वांट टू डू एन एक्सरसाइज विद यू एंड okay. So my request to you is that all of you listen to me very carefully, and whatever commands that I'm going to tell you, instructions that I'm going to give you, listen to them very carefully and watch me very carefully what I am doing. Okay. So the first thing that we will do is that we will check whether our hands are equal or they are unequal. Let's check our hands whether they are equal or unequal. And how we are going to do this? Let's Here you can see a horizontal line, and similarly here you are able to see a horizontal line. So what we are going to do is we are going to match these horizontal lines. So अगर यहाँ पे multiple lines हैं, don't worry about it. What you can do is you can just take the prominent one, bring the prominent line here, and bring your hands slowly in Namaste position. Bring your hands slowly in Namaste position, and जब तक मैं कहूँगा नहीं हाथों को हटाना नहीं है, and right in front of your eyes. And check the tip of your middle finger. आपकी middle finger की tip को check कीजिए. Check the tip of your middle finger. Okay. Are they equal? Are they equal? If they are equal, fine. If they are not equal, note down which is the smaller hand. कौन सा हाथ आपका छोटा है? Which hand is smaller? उसको आप note कर लीजिए. Okay. So once you have done this, now what we are going to do? जिनके हाथ बराबर हैं, वो ये एक्सरसाइज लेफ्ट हैंड के साथ करेंगे, लेफ्ट हैंड के साथ। और जिनके हाथ छोटे बड़े हैं वो ये एक्सरसाइज छोटे वाले हाथ के साथ करेंगे, वो चाहे लेफ्ट हो या राइट हो। सो इफ द छोटा वाला हाथ इज लेफ्ट देन यू डू इट विद लेफ्ट, अगर छोटा वाला हाथ आपका राइट है तो आप राइट हैंड के साथ करेंगे। ओके, तो करना क्या है, आई जस्ट टर्न अराउंड सो दैट यू कैन सी। कीप योर हैंड राइट इन फ्रंट ऑफ योर फेस, बिल्कुल सामने, नीचे नहीं, ऊपर नहीं, साइड में भी नहीं, एकदम सामने रखिए। And focus your eyes on your hand. Focus your eyes on your hand. Focus करते हुए आपने मेरे साथ कमांड देनी है। मेरे साथ मैं जैसे कमांड दूंगा जोर से बोलना है। Speak loudly so that you are able to hear this. And give a command along with me. Grow longer. 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 And now we will check our hands. जैसे हमने पहले चेक किया था वैसे ही दोनों लाइनों को आपस में मिलाइए, दोनों लाइनों को आपस में मिलाइए और धीरे धीरे अपने हाथों को नमस्ते पोजीशन में लेके आइए और चेक कीजिए कि आपने जिस हाथ को कमांड दिया था उस हाथ को क्या हुआ। आप देखेंगे कि आपका हाथ जो है वो पहले से बड़ा हो गया। तो जिन लोगों का हाथ बड़ा हो गया टाइप कीजिए यस। अगर आपका हाथ बड़ा हो गया तो टाइप कीजिए यस। Thank you, Jasmine. Thank you. Thank you. Okay, great. A lot of yeses here. Thank you. Thank you very much. So this is a simple exercise just to demonstrate the power of our words. And how do we create words? We create it through our thoughts. तो हमने पहले thought create किया that I am going to say this word, and then I said that word, and when I said that word, this is what is the impact of my words on my body. तो अगर मैं सुबह उठ करके अपनी बॉडी को ये बोलता हूँ यार फिर से वही जिंदगी शुरू हो गई, अरे यार क्या लाइफ है। Now if you say this, what do you expect out of life? Definitely it's going to be like irritation and frustration. But वहीं अगर आप सुबह उठ करके अपनी बॉडी को ये बोलो
Today is going to be a beautiful day. Thank you, God, for this beautiful day. Thank you for giving me this day in my life. I'm thankful to you that I'm alive. I'm breathing. I'm seeing. I'm eating. I'm tasting something. I'm free of any virus. If you thank God for that, definitely your rest of the day is going to be beautiful because your body responds to what you say. And that's what I have just proven to you, that your body responds. So similarly, like this is grow longer. Similarly, if you keep telling yourself, I'm not confident, I don't know what is happening in life, I'm not reaching anywhere, pata nahi kya ho raha hai, I don't know what is going to happen to my career, I don't know where am I going to reach, I don't know. So if you keep saying this to yourself, your body is going to respond in the same way. It's going to respond in the same way. So that's how we saw this. So let's now do what? Let's change the words. Let's turn around the words and see what happens. So same hand, जिस हाथ के साथ पहले एक्सरसाइज किया, अब उसी हाथ के साथ फिर से एक्सरसाइज करेंगे. This time we will turn around the words and see what happens. Okay? So सभी अपना जिस हाथ से पहले एक्सरसाइज किया था वही हाथ अपने फेस के सामने फिर से रखिए, and this time you will give a command. सेम वे लाउडली आप कमांड देंगे, लेकिन कमांड इस पर क्या होगी? से विल बी बैक टू नॉर्मल, 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 बैक टू नॉर्मल. एंड एक बार फिर से चेक कर लीजिए दोनों हाथों को मिला करके. अब क्या हुआ? हमने कमांड क्या दिया? बैक टू नॉर्मल. और क्या हुआ? व्हाट हैज हैपेंड? Great, thank you very much. So this is, so we just change the words and you just see the reaction. तो सुबह उठ के अगर आपने बोला ओ माय गॉड कैसा दिन है, और फिर से वही लाइफ, फिर से जाना पड़ेगा, अगर आपने ये बोला तो ऐसे रिस्पॉन्ड होगा. और अगर आपने वही बोला ओ वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, इट्स द रिएक्शन इज गोइंग टू बी लाइक दैट. सो यू सॉ one way reaction, other way reaction. So that's how our body responds. Our cells respond to the commands that we give. And how do we give these commands? 4 things: thoughts, words, images, feelings. So from today onwards, we will start feeling good. We will start feeling great. Not good, we will start feeling great. Somebody asks you, how's life? हाँ बस यार ठीक है, अच्छा है, ठीक चल ही रही है. मतलब you are not even sure कि आपकी लाइफ कैसे है. Say, oh it's great. What's not good? You are getting food to eat. You are getting water to drink. You are getting time to party. You're getting all the time to go to your college and study, and you know you have all the good friends in your life. What do you want? It's all great, right? So say it's great. I'm happy. So when you say it's great, my life is great, obviously it will respond that way. वही अगर आप वहां भी ये कहेंगे हाँ बस यार ठीक है ऐसे ही चल रहा है, बस कुछ बोरिंग सी है, तो बॉडी वैसे रिस्पॉन्ड करेगी, right? So how we are, so these are the few things that we can immediately start doing. Change your seeds, change your thoughts, change your words, change your images. Particularly first 1 hour, 1 hour from the time you wake up and 1 hour before you sleep. ये 2 टाइम में no social media, no television, no movies or nothing like that. So you have to give positive images to your mind. You have to give positive words to your mind. So read something. You can read your syllabus books. You can read some personal development books. Learn something for your growth, for your mental growth. Approach someone, talk to someone, discuss things which are healthy, which are good for your development. So give positive thoughts to your mind 1 hour before sleeping and 1 hour after waking up. Right?
Okay, so let's move forward. So what does our mind do? It has the power of thinking. It does thinking for us. What kind of thinking? Two type of thinking, पॉजिटिव थॉट्स एंड नेगेटिव थॉट्स. दोनों तरह के थॉट्स इसी माइंड के अंदर चलते हैं. वो थॉट्स जो हमें सक्सेसफुल बनाते हैं वो भी इसी के अंदर चलते हैं, और वो थॉट्स जो हमें फेल कराते हैं कहीं पे वो भी इसके अंदर चलते हैं. जो हमें हैप्पी करते हैं वो भी यहां से आते हैं, जो हमें सैड करते हैं वो भी यहीं से आते हैं. सो दोनों तरह के थॉट्स. कौन कौन से थॉट्स हैं एक बार इनको देखते हैं. तो पॉजिटिव थॉट्स में द फर्स्ट काइंड ऑफ पॉजिटिव थॉट इज ग्रैटिट्यूड. थैंक यू गॉड. सो यू स्टार्टेड योर डे विद ग्रैटिट्यूड. Okay, second is love. You love animals, you love people, you are empathetic to people. Okay, so love, joy, happiness, joy, passion. आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसको पैशन के साथ करें. पैशन होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए, अपने आप में यकीन होना चाहिए कि नो आई कैन डू इट. Let the whole world say that it is difficult. Let the whole world say that only 10% people are able to do it. Let the whole world say that people like this are not made for this. Don't worry. Tell yourself, I can do it. I can do it. Enthusiasm. Maintain enthusiasm in your life. Okay, so be physically active. Do whatever work you are doing, do it with full josh. And what are the negative thoughts? Anger. सबसे बुरा एंगर, वरी, फियर, डर. People fail in their life because of two main things. So if you do a research, you will find that two main things why people fail in their life are, first one, fear of failure, and second is fear of what others will say. ये दो रीजन हैं सबसे बड़े. अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मैं ये काम करने गया और सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या होगा, और दूसरा, लोग क्या कहेंगे. लोग क्या कहेंगे अगर ये हो गया, लोग क्या कहेंगे अगर वो हो गया, लोग क्या कहेंगे अगर ऐसा हो गया. तो ये लोग क्या कहेंगे, ये जो फियर है, ये दो चीजें हैं जो वो हमें सबसे ज्यादा पीछे खींचती हैं सक्सेसफुल होने से. इरिटेशन, डाउट, अपने ऊपर डाउट आते रहना कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, आज तक तो कभी किया नहीं है, कोशिश करने जा रहा हूं, होगा कि नहीं होगा. सो व्हेन यू अप्रोच एनी वर्क विद एन एलिमेंट ऑफ डाउट, rest assured that you are not going to be successful. So you have to go with 100% confidence. Yes, I can do it. Victim mentality. अरे मेरा तो ऐसे ही है, लोग तो मुझे हेल्प नहीं करते हैं, सब मेरा फायदा उठाते हैं, मेरे से नोट्स ले जाते हैं, फिर बाद में पता नहीं उसको फाड़ देते हैं, फेंक देते हैं, मेरे साथ सब धोखा करते हैं, मैं कितना भी पॉजिटिव रहता हूँ लोग मेरे साथ हमेशा नेगेटिव काम ही करते हैं. तो ये जो विक्टिम मेंटालिटी, अपने आप को विक्टिम बना के रखना, दिस इज अनदर नेगेटिव थिंकिंग. So ये है हमारे positive thoughts and negative thoughts. Now I want to tell you something about tree of life. Very very important. हमारा जो ट्री ऑफ लाइफ है, इसमें जो फ्रूट्स है ना जो नजर आते हैं, ट्री के ऊपर जो फ्रूट्स नजर आते हैं हमें, तो बीज हमने डाले, तो जो भी बीज आपने डाला वो उगेगा जरूर, इतना तो श्योर है. तो वो बीज चाहे कांटे का था चाहे फल का था, जो भी बीज आपने डाला वही उगेगा. तो जमीन तो वही उगाने वाली है और 100% उगाने वाली है. तो जो बीज आपने डाल दिया उस पे आपको कोई फ्रूट मिला, वो जो फ्रूट है ना वो आपकी लाइफ का रिजल्ट है. दैट्स द रिजल्ट ऑफ योर लाइफ. तो आज अगर आपको अपनी लाइफ में जो आपके रिजल्ट्स हैं वो सब अच्छे अच्छे नजर आ रहे हैं, तो दैट्स द फ्रूट ऑफ द सीड दैट यू हैव सोन इन द पास्ट. दैट्स व्हाट आई सेड अर्लियर आल्सो. सो फ्रूट्स आर द रिजल्ट्स दैट वी सी इन आवर लाइफ. जो ब्रांचेस हैं हमारे ट्री की, वो हमारा बिहेवियर है. हाउ डू वी बिहेव टू सर्टेन थिंग्स. There will be situations, there will be people in our life, there will be circumstances in our life. How do we behave in those circumstances? They are the branches on which the fruit is born. जो ब्रांच के ऊपर जो है वो फ्रूट लगता है. तो किस ब्रांच के ऊपर? हमारे बिहेवियर की ब्रांच के. और जो इस पेड़ की जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो है हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी धारणाएं, हमारी मान्यताएं. और हमारी धारणाएं, हमारी मान्यताएं, हमारा बिलीफ सिस्टम, दे आर
categorized in 4 categories. First of all is the health. हेल्थ के रिलेटेड हमारी मान्यता कि जैसे हम कहते हैं कि बस अब बूढ़े हो गए यार, अब तो कोई ना कोई बीमारी लगी रहनी है ना। ये बहुत सारे हमारे जो बुजुर्ग हैं वो ये ऐसे, आप उनको पूछो और दादाजी कैसी हालत है, बस यार अब तो बूढ़े हो गए, अब तो कोई ना कोई बीमारी लगी रहनी है। तो अगर आपने बिलीफ सिस्टम ये बनाया है कि बूढ़े होने पर कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, तो आपके फ्रूट क्या होंगे? अगर रूट ये है तो फ्रूट क्या होगा? बीमारी। रिलेशनशिप्स, अगर रिलेशनशिप्स के प्रति हमारी क्या धारणा है? अगर रिलेशनशिप के प्रति हमारी बिलीफ सिस्टम ये है दैट दुनिया बड़ी जालिम है एंड पीपल आर नॉट ट्रस्टवर्दी, डोंट ट्रस्ट एनीबडी, अगर ये हमारे रूट है तो हमारे फ्रूट्स कैसे होंगे? हमारे सारे रिलेशनशिप्स खराब होंगे, सारे रिलेशनशिप, बिकॉज आप किसी को ट्रस्ट करोगे ही नहीं। इफ यू डोंट ट्रस्ट एनीबडी, व्हाई वुड समबडी एल्स ट्रस्ट यू? सो इफ देयर इज नो ट्रस्ट, देयर इज नो रिलेशनशिप, there is no friendship, there is no husband wife relationship, there is no relationship between brothers. So अगर ये आपका रूट में ये है कि people don't trust me और people are not trustworthy, then आपके फ्रूट्स कैसे होंगे? रिलेशनशिप्स वाले फ्रूट्स जो है वो आपके खराब होंगे। थर्ड, वेल्थ। तो पैसे के रिलेटेड लोगों की बहुत धारणाएं होती हैं कि जगह जगह पे लिखा होता है पैसा प्यार की कैंची है। तो अगर आपकी धारणा ये है कि मनी इज नॉट गुड, रिच पीपल आर नॉट गुड, तो अगर रूट में ये है तो फ्रूट में क्या होगा? नो मनी, मनी विल नॉट कम टू यू, बिकॉज द मोमेंट मनी कम्स टू यू, you will give a signal that I don't need money because money is bad. People who have money are bad, they are corrupt, they are egoistic, they look down upon others. तो अगर ये आपकी धारणा पैसे के रिलेटेड है तो आप जितना मर्जी कमाएं, जितना मर्जी अच्छी पोजीशन पे चले जाएं, जितना मर्जी आपका बिजनेस अच्छा हो, पैसा आपके पास टिकेगा नहीं, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेल्फ इमेज। व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ? व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ? लाइक मेनी पीपल यू वुड हैव सीन और हर्ड सेइंग, यार मैं जिस काम में हाथ डालता हूं ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है। आप कोई वॉलंटियर्स की बात करें, अच्छा तुम ये काम कर देना, यार ये किसी और को दे दो, यार इंपॉर्टेंट काम है, मैं जिस काम में हाथ डालता हूं ना कुछ वहां पे गड़बड़ हो जाती है, तो ये किसी और को दे दो। आई डोंट नो व्हाट हैपेंस, व्हेनेवर आई गो एंड सिट इन द इंटरव्यू, मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। मतलब आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, आई डोंट नो व्हाई, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है। इस तरह की जो आई एम नॉट कैपेबल एनफ, I don't know if I will be able to achieve this. तो ये जो अपने बारे में जो धारणा है, सेल्फ इमेज, अपनी ही इमेज जो बनाई हुई है हमने, ये सबसे ज्यादा डेंजरस है। Because if this is not good, then all other 3 belief systems are going to be wrong, defective. So self image, your own image about yourself is very, very important. If you don't love yourself, you can't love anybody else. You can't expect anyone else to love you. If you don't respect yourself, you can't respect anyone and you can't expect anyone else to respect you. अगर मैं खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं करूंगा तो कोई दूसरा मेरी रिस्पेक्ट क्यों करेगा? Yes or no? Simple. तो करना क्या है? तो ये जो पेड़ है हमारा, हमारी लाइफ का जो ट्री है, हमें फ्रूट्स देखने हैं। फ्रूट्स कैसे हैं? Are the fruits good? If the fruits are good, very good, perfect. If fruits are not good and you want to change the fruits, what do you need to do? Branches change करने से fruit change होंगे? नहीं। तने को change करने से, stem को change करने से fruit change होंगे? नहीं। But if you want to change the fruits, you will have to change the roots. If you want to change the fruits, you will have to change the roots. And what is there in the roots? The belief system. आपकी धारणाएं, आपकी मान्यताएं, आपके बिलीफ्स, आपका माइंडसेट। तो ये माइंडसेट आपको अपना चेंज करना पड़ेगा, हेल्थ के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, वेल्थ के बारे में एंड अपने बारे में। तो डे यू आर एबल टू चेंज द माइंडसेट, योर फ्रूट्स विल स्टार्ट चेंजिंग। तो करना क्या है? तो ये जो ट्री है हमारा, which is not giving us good fruits, we need to uproot it, we need to throw it away, uproot the tree which we don't need, and do what? Plant a new tree, plant a new seed, and get a new tree of what? Of the good belief system. If your belief systems are strong,
then what you will get? You will get good fruits. So this is very simple. Simply put, it is I have given it to you, but this is not so simple. And this is what I do as a mindset transformation coach and mindset transformation trainer. So although it's not possible to handle, it's a very vast subject. So doing it in 1.5 hours is difficult. But I have tried to put in a lot of stuff and give you all the information. But as a trainer, what I do in my advanced trainings is that I teach people how to uproot these wrong belief system वाले trees. ये खराब वाले प्लांट हमारी लाइफ से कैसे उखाड़ने हैं, कांटों वाले प्लांट कैसे उखाड़ने हैं, फेंकने हैं, और उसकी जगह पे नए प्लांट्स, खूबसूरत पौधे कैसे लगाने हैं. तो ये this is the job of mine as a mindset transformation coach or mindset trainer. So this is what I teach in my programs, which I do, which are much longer than this. So let's watch a video about mindset. Let's see this video about belief system of this small child, and let's try to compare the mindset of this child with the mindset that we have. Sir, your your video is not visible. Okay. Just let me see. Still, it is not visible, sir. Just give me a second. Now, now, is it visible now? सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल चल
तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, 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 हिंदुस्तान चले। So this is all about the mindset. So when your mindset or your self image is so strong, your belief system is so strong that you can achieve anything. Nothing is impossible. So that's the belief system of this child. Now everybody else is thinking ये मेरा काम नहीं है, इसको कैसे उठाएंगे, इसके लिए क्रेन चाहिए, ये तो पुलिस वाले करने चाहिए, ये तो एमसीडी को करना चाहिए. Somebody saying this country is not good, I hate this country, and your police are useless. So everybody is blaming everybody else and sitting and watching. But that child's belief system is only one way focused. What? I want to remove this tree from here. I want to lift this tree. तो उसके माइंड में कभी ये चीज आई नहीं कि मैं बच्चा हूं, मैं नहीं उठा सकता. ऐसा नहीं है कि उसको भी पता है कि इतना बड़ा ट्री है, मैं उठा पाऊंगा कि नहीं. But he just thinks in one way. The belief is that I can do it. And he goes with that belief system that I can do it. And when you have a belief system, जब आपका बिलीफ सिस्टम ये कहता है, जब आपके माइंडसेट ये है that you can achieve anything, then the entire universe will come and help you to achieve your target. Entire world will come around you, rally around you to make sure that you achieve what you want in your life. So it's very, very important to have your mindset very clear, very positive, that if I want to do it, I want to do it with 100% commitment. I want to do it with 100% dedication. I want to put in my 100% effort to achieve this. And when that is there, then nobody can stop you from achieving your target. So you must have heard about this story about the elephant. कि वो सर्कस वाले एक हाथी के बच्चे को पकड़ के लेके आए और उन्होंने उसको, बच्चा छोटा था तो एक चेन के साथ बांध दिया और वहां पे सर्कस में बांध. उस बच्चे ने रोज सुबह देखना कि बाकी के जो हाथी हैं वो सब रेडी होकर के, तैयार होकर के जाते हैं और उनके ऊपर अच्छे अच्छे उन्होंने कपड़े पहनाए हैं, वो जाते हैं, फिर वो वापस आते हैं, कुछ अपना खेल खिलाना करते हैं, सब कुछ. तो उसका भी मन करता था कि मैं भी जाऊं इनके साथ. तो उसने अपनी वो जो चेन थी उसको झटके मार के तोड़ने की कोशिश की. बट बच्चा था, उसमें उतनी ताकत नहीं थी, उतना स्ट्रांग नहीं था, तो वो चेन को तोड़ नहीं पाया. फिर उसने रोज कोशिश करनी, रोज पैर मारना, रोज उसको चेन को तोड़ने के लिए अपना पूरी हिम्मत लगानी, लेकिन बच्चा था, तोड़ नहीं पाया. तो एक बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 10-15 दिन तक लगातार वो उसको जब कोशिश करता रहा, नहीं टूटी. तो एक दिन उसने मन में ये बिठा लिया कि भाई अब ये चेन तोड़ना मेरे बस की बात नहीं है. अब क्या हुआ, समय गुजरता गया, धीरे 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 हाथी बड़ा हो गया. हाथी बड़ा हो गया, चेन वही है. आज हाथी इतना ताकतवर हो गया है कि अगर वो एक झटका मारे तो उस चेन को तोड़ सकता है, लेकिन वो तोड़ता नहीं है. क्यों? क्योंकि माइंडसेट ये बन गया, बिलीफ सिस्टम ये बन गया दैट आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग इट. तो अगर आपके मन के अंदर ये बैठ गया कि आई एम नॉट गुड एनफ टू डू दिस, आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग इट, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग इट, तो काम चाहे कितना भी आसान क्यों ना हो, आप रुक जाओगे. सो जो हमें रोकने वाली जो ताकत है ना हमारे अंदर, जो मैंने कहा कि सक्सेस भी हमारे अंदर है और फेलियर भी हमारे अंदर है, तो हमें जो चीज रोकती है सक्सेसफुल होने से, वो हमारा ही बिलीफ सिस्टम है. जो हमारे सेल्फ लिमिटिंग, खुद को रोकने वाले जो बिलीफ है, अरे लोग क्या कहेंगे, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कैसे करूंगा, कौन मेरी हेल्प करेगा. तो ये जो सारे अंदर से हमें पकड़ के पीछे खींचने वाली जो धारणाएं हैं, जो सोच है, वो हमें रोकती है सक्सेसफुल होने से. अदरवाइज लाइफ में आप कितने एग्जाम्पल, मैं आपको हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूं जहां भी लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं थे, उनके पास साधन नहीं थे, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ में कहीं के कहीं पहुंच गए.
एक पिछले साल एक न्यूज आया था कि एक जूता रिपेयर करने वाले की लड़की जो है वो आईएएस क्लियर कर गई। और आईएएस क्लियर करना मतलब कम से कम 6-7 लाख रुपया लगता है कोचिंग लेने के लिए, और फिर पता नहीं लोगों को 3-3 4-4 साल लग जाते हैं, अटेम्प्ट लग जाते हैं आईएएस क्लियर करने के लिए। लेकिन जिसके पास कोई रिसोर्स नहीं है वो भी इसको क्लियर कर सकता है, बशर्ते उसके माइंड में ये हो कि मुझे ये करना है, मुझे ये अचीव करना है, दैट्स इट। तो सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमारे अंदर से ये जो आवाजें आती है ना पीछे खींचने वाली, रोकने वाली, इन आवाजों को हमें बंद करना है और उनको जस्ट यू हैव टू से शट अप एंड आई विल जस्ट डू इट। तो ये जो है अगर हम अपना इस तरह का बिलीफ सिस्टम बनाते हैं तो कोई भी चीज हमें लाइफ में सक्सेसफुल होने से रोक नहीं सकती है। वो सक्सेस चाहे फाइनेंशियल सक्सेस हो, चाहे रिलेशनशिप सक्सेस हो, चाहे हेल्थ सक्सेस हो, चाहे करियर सक्सेस हो, चाहे एजुकेशन सक्सेस हो। तो ये दिस इज द मैसेज दैट आई वांट टू give to all of you, and time is very limited, so I can't really teach you all the things that I have in my kitty, but then what I can do is that I can share with you my phone number. This is my WhatsApp number, so you can stay connected with me, or you can go to my website www.jagmohanbhogal.com, and there is a registration page there on link. You can just go and register for my next 2-hour workshop where I deal with this topic in much more detail. And बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं मेरी स्टूडेंट्स के लिए हैं, कॉर्पोरेट्स के लिए है, तो आप कोई भी ट्रेनिंग, वहाँ पे बहुत सारी फ्री ट्रेनिंग्स भी हैं, तो आप वो अटेंड कर सकते हैं। सो ऑल दैट इंफॉर्मेशन you will get on my Facebook page or on my if you register here, then I will keep you in my mailing list. So whatever updates are there, I can keep sending you, and I keep posting all this material on my Facebook page also, so you can be there, you can follow my page, and you can access all this material from my Facebook page as well. Or if you have any doubt, if you have any query, if you have any personal thing that you want to discuss with me, please feel free to call me or send me a message on this number on WhatsApp, and I'll be more than happy to attend to any queries or questions coming from you. So with that, I have finished. Thank you very much for having me here, and if you have any questions, the house is open. Over to you, Divyanshi. Is there any questions coming up? Yes, sir. There's a question from Mr. Animesh Parekh. Should we share our future plans with others? Will it affect our mindset, concentration? Am I audible, sir? Yeah, I can hear you. Should we share our future plans with others? Will it affect our mindset, concentration? Should you share your future plans with others Yes. when it affects our? Will it affect our mindset, concentration? See, it depends. What is it like? I mean, there is no harm in sharing with others. Again, there has to be, you must understand what kind of people you have around you. So, like they say, you are an average of 5 people around you. So, if you feel that people around you are very positive, they are going to support you in your mission or your objective, then there is no harm in sharing with them. But if you feel that people are going to misuse it, or maybe thereafter pass negative remarks to you, or make fun of you or things like that, then it is definitely going to have an adverse impact on you. So be careful with the kind of people. There is no harm in sharing your plans. Thank you so much, sir, for such a good answer. एंड और भी अगर और लोगों के क्वेश्चंस हैं तो वो सर से डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। अब टाइम की वजह से हम और क्वेश्चंस नहीं पूछ पाएंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने हम सब के लिए अपने लिए टाइम निकाला, वर्कशॉप कंडक्ट करी, वो भी इतने बिजी शेड्यूल में से। मैं आशा करती हूँ कि हम आगे भी ऐसे ही सफर बना रहे और हम आगे भी ऐसी वर्कशॉप करते रहें। आज मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीत ली सूर्य बनकर वही निकलता है। धन्यवाद। Thank you very much, Devyanshi. Thanks a lot to everybody, all the audience.